वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द बाइक हंट सीरीज फॉर मयूरेश जो अभी पूरा जोन में है सॉन्ग्स बोल के सॉन्ग्स कितने म्हणतात सिंग करके। ओके तो आज हम देखने जा रहे हैं हाइनस होंडा and on the way we had a few calls related to EHD and Java service here in Goa. It was 50-50 reaction. We honestly don't know what to say. But yeah, comment and let us know कि आपके सिटी में कैसा है Java and EHD का service and all those things like after sales basically. आणि रॉयल एनफील्ड पळयतलो रे गोरिल्ला आणि मीटर ऑपोजिट लेन होता. So we are going to test out the Royal Enfields as well. Mostly the Meteor 650 आणि हे ना रे गोरिल्ला या मिलते हैं शोरूम पे. पहिली कितें रॉयल एनफील्ड पहिले होंडा या जो भी बोला वो फिर से बोल. क्या चल रहा है ये? Obviously there is no fuel in the tank, but still It is very light, way too light. It is like Expulse, bro. way too light. Okay guys, so this is the NX 500 twin cylinder bike. It is very light. I mean, ये मेरे हिमालयन जितनी लाइट है जो स्क्रैम्बलर हिमालयन मैंने बनाई है उतनी लाइट है. it's crazy bro. Shit. 7 lakhs कुछ पड़ता है on road. And by the way, we are gonna test ride this bike today. Compared to this and that, That one was good, bro. RS. Why? Why? Exhaust is too good. Exhaust. मैंने बोला था. आणि Only that seating position is different. माशी कमिटेड आ. It's like aggressive. Okay. Okay. This is more like a air. And now he is taking the test ride of CB300R. So what do you think? Which one he will choose? I think it will be a very tough choice between the RS and the 300R. 300R because I like the power on it and the exhaust note as well. And RS, I think he liked the RS compared to the classic which Highness and classic which he rode. So between वो दोनों के बीच में पड़ा. I think R तक का चौड़ा आवडतं. 300R, no? तू काय कितें दिसता? I think 300R will be best option Yeah. for him. But it's Mayuresh after all. Yes. तो classic prefer We करत. were choosing the bike. आग बंद करके 300R. I have not ridden it. I'll comment after riding it. Speed 400, I had CB300R in my list. सारखे. But वो तभी इतना ओवर प्राइस था कि मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया. Correct. You had told me about it actually. मयूरेश क्या बोलते हैं? This one is too aggressive for me. Okay. Sitting position is also too aggressive and power is too much. और चोड रे. ओके. म्हणजे तेंका कंपेअर केलो न्हू. But एक सांग म्हाका after like 1.5-2 years will you be bored with the Highness's power? That I can't tell. Power wise रे तू म्हणटा ही चड हा म्हणटा. So Highness तुका आता सपोज Highness आता गोष्टी comfortable दिसता. Would you be bored after like 2 years or 1.5 years? ना मरे. Because the sound is good, Sound is good. ride quality is good. RS. RS, yes. So you are stuck on RS. Yeah. Okay. RS is good. Yeah, good decision. Good decision. Good decision. Exactly. मयुरेश किती म्हणता? ए किती म्हणता? I don't know. सूट जाता है का? हाँ, सूट तो हो रहा है लेकिन मयूरेश को हमने completely confused कर रखा है अभी. Bro, but you have to check all the options. You can't just go with एक bike.
फिलहाल मयूरेश को हमने लाइक कम्प्लीटली कंफ्यूज कर रखा है. लाइक ही स्टक बिटवीन मैनी मोटरसाइकिल्स बट स्टिल 80% उसका माइंड अभी तक जावा पे ही है, बॉबर पे ही है. उस पे माइंड है. अभी देखेंगे, कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग अभी. नाउ आई थिंक इन हिज लिस्ट इट इज बॉबर एंड RS होंडा. हाँ, those two. He rode the Meteor 350 right now. Okay. I feel if he test drives the 650, he'll love the engine. Yeah, but he won't go for the 650. He can. Show this bike. He might go for this one. चार ऑप्शन 3 ऑप्शन झाले आता Okay. एक ती मध्ये होंडा Yeah, only. Okay. Bro, चलोन पय बट सोलून आता तो नाव म्हणतात Classic. क्लासिक चलय नी नॉर्मल. Same engine same. इंजिन सेम हा. तसं आलं एक काम कर. आणि तिसरी बॉबर. मीटरच चलित अमुक क्या बोलते हो? GTA character. Look at this bike, man. It looks amazing, especially that white border. So we are ending. Yeah, we are ending this vlog over here. 2 parts. अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा अब तक तो हेड आउट टू आवर चैनल्स. थोड़ा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, सो यू कैन हेड आउट टू बोथ आवर चैनल्स एंड चेक इट आउट. And let's yeah. see कौन सा बाइक आता नेक्स्ट होपफुली डिलीवरी वीडियो रहेगा इसके बाद. है. Yes. क्या बोलता? So होय ब्रो ऑफ कोर्स कुछ आउट ऑफ सिलेबस आएगा आउट ऑफ दीज 3? ना ठीक है. सो एक्सपेक्ट एनी ऑफ दीज 3. 3 एलियाला पुढे ओला एलियामध्ये We'll disown you as friends. No, jokes apart, you choose any of these 3 bikes, you'll be happy with that. I think that's the final conclusion I'll give you. also to comment like आप कौन सा गाड़ी चूज हाँ, करोगे correct. between Jawa, Bobber 42, RS 350 Honda and the Goan Classic 350. Yes, आप कौन सा चूज करोगे? प्लीज कमेंट डाउन बिलो. definitely. एंड आई होप यू गाइज हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. लाइक जो लोग भी बाइक लेना चाहते हैं ऐसे वीडियोस लाइक लिटरली इट इज हेल्पफुल फॉर देम. सो या आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. Thank you so much for watching. Peace out. And if you want to travel, Wanderlost India, jaldi. It's his company, so jaldi. If you want to travel, you have to contact him. Details रहेंगे screen पे. Bonus. Mahesh, now you need to find your way. Please subscribe, whatever.